Department of Kayachikitsa, Guru Gorakshnath Institute of Medical Sciences. The chairperson of the session is Dr. Sridhar S. Lakundi, Professor GGIMS, and the co-chairperson for the session is Dr. Sandhya Padak, Associate Professor GGIMS. I'm Dr. Sri Lakshmi, Assistant Professor GGIMS, is honored to be the session coordinator. And the reporter for the current session is Akash Verma, second Prof BMS student. Now, I welcome our respected speaker, Dr. Rinjin Krishna, onto the dais. And I also welcome our chairperson, Dr. Sridhar S. Lakundi, and also co-chairperson, Dr. Sandhya ma'am, onto the dais. Now I request Dr. Sandhya ma'am to introduce our resource person. सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को आशीष। आप लोगों का ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सर का परिचय देना चाहूँगी मैं। डॉक्टर रिंजिन कृष्णा सर, आपने बीएमएस की डिग्री एसडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल हसन कर्नाटका से 2009 में पूरी की। आपने अपना स्नातकोत्तर की डिग्री मनोविज्ञान एवं मानस रोग विभाग में से एसडीएम कॉलेज आयुर्वेदा हॉस्पिटल हसन द्वारा 2013 में पूरी की। 2016 में क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी पे सर ने सर्टिफिकेट्स कोर्स किया। वर्तमान में सर का काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल स्किल इन में पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं। सर का 10 साल से ज़्यादा वर्षों का एकेडमिक और रिसर्च का एक्सपीरियंस रहा है। सर ने अपने करियर की शुरुआत एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीजी स्टडीज़ इन काय चिकित्सा श्री काल भैरवेश्वर स्वामी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बैंगलोर कर्नाटका से किया है। फिर उसके बाद सर ने एवीएन आयुर्वेदा हॉस्पिटल मदुरई तमिलनाडु इंडिया वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वेलनेस और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के तौर पे काम किया। इसके बाद सर ने गवर्नमेंट आयुष आयुर्वेदा केरला में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, होलिस्टिक बैकवर्डनेस, इसके ऊपर प्रोजेक्ट पे केरला स्टेट मेंटल हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत पे स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम किया है। आपने नेशनल आयुष मिशन और स्टेट मेंटल हेल्थ सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ केरला, गवर्नमेंट आयुर्वेदा हॉस्पिटल केरला, उस पे हर्षम नाम के डिप्रेशन पे बने हुए प्रोजेक्ट पे एज अ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम किया है। उसके बाद आपने असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीजी पीएचडी स्टडी इन काय चिकित्सा पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा में काम किया है। वर्तमान में आप गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एज अ एसोसिएट प्रोफेसर कम कंसल्टेंट आयुर्वेदा साइकेट्रिस्ट के तौर पर कार्यरत हैं। सर एक वेलनेस कोच, मेंटर और एक मोटिवेशनल स्पीकर है। सर ने अभी तक के 8 गेस्ट लेक्चर ऑनलाइन और ऑफलाइन दिए हैं। सर ने अभी तक इंटरनेशनल पीयर रिव्यू में 6 पेपर और एक नेशनल पीयर रिव्यू में प्रकाशित किया है। सर एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के गाइड और 6 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के गो गाइड रह चुके हैं। मैं सर को अपने व्याख्यान के लिए मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। Am I audible? Clear. 1 in 7 Indians had a mental health disorder. Am I audible? No. Hello. Hello. Am I audible? Thank you. 1 in 7 Indians are suffering from one or another mental health disorder, ranging from mild to severe. According to State of World's Children 21, nearly 14% of young Indian aged between 15 to 24
or you can say 1 in 7, reported frequently feeling depressed or some or the other kind of anxieties or lack of interest in activities. 1/3 of all suicides globally happen in India. Suicide is the second largest cause of death, apart from road traffic accidents in India. So untreated mental health issues in adolescents can impact development, productivity, and also a future outcome. And because of all these things, today I have taken this topic addressing adolescent mental health, because today if we can deal with the problems of your mental health, the problems that you are facing, day-to-day stress, then we can try to help you get better, get productive, get fruitful for the coming days, because you are tomorrow's workforce. Good afternoon, everyone. 13% of global population is living with mental disorders. Almost 31% with anxiety disorders, 28.9% depressive disorders, and various other mental illnesses. So, can anybody tell me what is mental health? What do you mean by mental health? What do you think is mental health? Anyone? Whatever comes to your mind, please. Let us keep it as a discussion, not a lecture. Otherwise, this post-lunch session, you people will sleep. What is mental health? Anyone? What is mental health? मेंटली हेल्दी किसको बोलेंगे आप मेंटली हेल्दी हैं आप लोग? आर यू ऑल मेंटली हेल्दी? नो, you people have reached the right place. OPD number 3, first floor, GGIMS is where you will find me. Okay, so tell me, what do you mean, what do you think, what is mental health? Anyone, anything that is coming to your mind? क्या है मानसिक आरोग्य? No one? Sir, the psychological well-being of a person. एक मिनट, yeah. Thank you, sir. आपका? Sir, the psychological well-being of a person. Psychological well-being of a person. What do you mean by well-being? Sir, if someone is healthy, like if someone has control over his or her mind, we can say that the person has a good mental health. Good. So mental health, according to WHO, is defined as someone who is able to realize his or her own potential. आप अपनी क्षमता को समझ सकते हैं, आप अपनी क्षमता को समझ के उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं, उसको नॉर्मल मेंटल हेल्थ मानेंगे. Can cope with the normal stresses of life. Day to day you are going to get a lot of stresses. So are you able to handle them? Are you able to overcome them? Are you able to work productively? Can work productively and fruitfully. You are productive to yourself, you are productive to whatever organization you are working for, and then you are able to make a contribution. You're able to make a contribution to the society. If all these points are ticking in your diary, then you are mentally healthy. Yes? No? It's not ticking. Okay. So now today's very, very important topic, adolescence, adolescent mental health. So what do you mean by adolescence? See, adolescence is considered as, it's a transitional period of growth and development that bridges childhood and adulthood. Typically, it is taken as 10 to 19 years, but often it is considered 10 to 24 years of age is also considered under
adolescence. Okay, so some of the changes that happen during this phase, physical changes like onset of adolescence links to puberty, development of secondary sexual characteristics, then cognitive changes like critical thinking skills. You start thinking critically, you start thinking more, increased communication skills, decision making, you want to take your own decisions, argumentative, you start getting argumentative little more, and developing new interests, new hobbies. Emotional changes start becoming unpredictable. This is the phase where a lot of mood swings happen. Okay, sensitive to almost everything, easily manipulated, and increased sexual feelings. And social changes. This is a very important part. Desire for independence. This is the phase where you want to be known on your own. Strong need to belong to a group, to peers, to the friends group. Shift in dependence, that is family to peers. This is the age, this is the phase where there is a transition from school life to the college life. So now the family becomes friends and the friends become family. Critical comparison of parents with others, increased interest in opposite sex, may often feel uncomfortable and awkward with other sex, and seek deeper friendships, deeper relationships, deeper meaning to almost every relationship that happens. So why adolescent mental health is important. Adolescence is a crucial period for developing social and emotional habits important for mental well-being. These include adopting healthy sleep patterns. How many of you sleep well? 10, 10:30, 11 you sleep and you wake up by 5:36, 7, or you sleep by 1:30 to 2:33 and wake up by 6. Exercising regularly, going to gym or going for walks or jogs, anything. Developing coping, problem solving and interpersonal skills. Problem solving skills, interpersonal skills, the various behaviors and tactics that you use to interact with each other, interact with other people, and learning to manage emotions. So this is the phase where all these things are happening, and all these changes, all these new behaviors are very, very important to have a healthy life, to have a healthy life that will lead to a productive and fruitful life ahead. So what are the common challenges in adolescence? What are the challenges that you are facing? Some of the challenges that you are facing: exams, attendance, sitting here, sitting here, attendance, exams, then viva. Okay, see, these are the best years of your life. These are the best years of life. Lot of expectations are there. Your own expectations, your parents' expectations, your relatives' expectations, even your neighbors' expectations. All those expectations are there. Greater academic demands as you are crossing to next level, higher level. Academic demands are getting difficult. Unstructured time, no proper timetable for anything. You know, getting up at any time, coming to college at any time, sleeping at any time, during the classes sleeping, and during nights chatting, and evenings not going for any exercise, being on your own in a new environment, college life. Once you're out of your school life, once you're out of your home, out of your parents' protection, once you're out of that, it's a new environment. Everything is new. New people, new relations, changing relationships with your family and friends. Substance abuse. This is the time where most of the people they get into some or the other kind of addictions. Sometimes it might be just for this, they might just start for just for fun, but then
the fun becomes really very difficult to leave. And also suicidal behavior. As I already said, 1/3 of global suicides are happening in India. So these are the most important challenges. Many more will be there. As every individual, we all have different challenges in life. But today, I'll be dealing with three most important challenges. Can anybody guess that? Three most important challenges: internet or social media addiction, anger or aggression, and exam fear, test anxiety, or what you call performance anxiety. So these are the three important challenges that today I will be discussing with you. So internet addiction. What do you mean by internet addiction or social media addiction? आप में से किसी को भी नहीं है, मुझे पता है. Nobody uses social media. So what do you mean by internet addiction or social media addiction? Waiting for likes, subscriptions, shares, comments. And if you don't get that, waste of taking all those pics, right? But as soon as you click, you have to put it on social media and wait for likes and comments. Okay, so that is just a very small part of internet addiction. So there's something called a cyber sex addiction. This, which is one of the most important part of addiction in internet addictions. Compulsive use of internet, pornography, adult chat rooms, all these dating sites, fantasy sex, all these things is part of cyber sex addiction. This is one out of a social media addiction. Another thing is cyber relationship addiction. Addicting to social networking like chat rooms, texting, sexting, all these kind of activities. All that comes under cyber relationship addictions. Then net compulsions. Under net compulsions comes all the online activities, online gaming, online getting involved into all kinds of online activities. PUBG. How many people still play PUBG or such games? No, nobody. Earlier there was one game called Candy Crush. Ah. Then after Candy Crush, there came one game called Blue Whale. Right? यहाँ पे कोई नहीं खेला, right? Because you are here. If you would have played, you would not have been here. Blue Whale. So, all these kind of online activities, they come under net compulsions. And then computer addiction, all kinds of offline activities, obsessive playing offline games, and computer programming. All these comes under. So all these comes under internet addiction or social media addiction. So think, introspect yourself and try to think whether you come under any of this. If at all you come under any of this, then this session is very important for you. Okay. So what are the risk factors involved? What will happen because of all this? So there is no time for anything. You lose track of time for doing anything. It causes a lot of anxiety, causes a lot of depression, improper or lack of personal hygiene. You don't have time because you might have slept very late, you got up very late, you have to come to the class. So without taking bath, without doing anything, just come running with a new apron. So nobody will know what happened. So lack of personal hygiene, that is a very important issue that happens. And even sometimes it also causes physical issues like dry eyes, headaches, body aches because of having improper positions, right? Many of you might be sitting. How do you sit? Many of you might be sitting like this, with this, inside the class also holding mobile like this. All these kinds of improper positions is definitely in time it is definitely going to make you have some kind of irregularity or pain with your spine. So how to stop internet addiction? You want to know that or should I skip? No, yeah, skip. Okay. So first thing, acceptance.
Very, very important thing. Admit it that you have a problem. So without admitting, without accepting that you have a problem, you cannot change it. So first thing, very, very important thing, accept that you have a problem, admit that there is something to be need to be done, and you have to do that. Next thing is internet fasting. That is, limit the usage. Every day, like now, all the mobiles are having this. They show this timing, right? How many hours you have been using all your mobile and all that. So what you can do is, somebody is speaking. Okay. So what you can do is you can just cut short that time. So every day you keep, like, I won't be using my mobile between 6 to 7 p.m. or 7 to 8 p.m. or 8 to 10 p.m. Every day you keep a routine like that. Slowly you will start. First you start with doing only for 10 or 15 minutes. Because there is something called as, without mobile you have this phobia also, no? Suddenly mobile is not there. Oh my God, what will happen? I have lost track with the world. What is happening in the world? How many likes or shares my friends would have got, right? So start internet fasting. Start keeping your mobile on silent or keep your mobile off for at least 15 to 20 minutes in a day. Start with that, and slowly you can increase the time. Next, socialize. Learn to be friendly with other people. Start moving out of your confined spaces. Come out, meet people, greet people, and start doing some activities together. Develop new hobbies. Find new hobbies, but especially find hobbies which are outside. Come to the ground, come outside. Hmm? Be with friends, at least 3-4 people or 5-8 people, get into a group and get into some kind of activities. At least you will be helping all those other 5-6 people who are actually with you. Change your communication patterns. Sitting inside the class itself, you are messaging to the other person. Happens. Inside the home, from one room to the other room, we are messaging. We are calling from inside the room. All this is happening. In one way or the other, it is happening with everybody, everyone, right? So stop doing that. At least inside home or inside class, start speaking to each other instead of messaging. Set up a routine or timetable and follow it. Set up a timetable, not to show anybody else. Set up a timetable, keep it with yourself. Do not put a timetable and then share it on the social media. No use. Make a timetable, start using it. Prioritize your needs. What do you need? What do you need? Don't know. What do you need? Study. Anything else? What do you want to study? What do you want to study? Money. पैसा बोलता है. It's most important. Anything else? Food. Then happiness. Then what? Shelter. Okay. Roti, paisa, kapda, makan. Right. This you are getting with everything, almost everything. So what is the priority? First priority. What do you want? Money. Money for everything. पैसा है तो, है ना? पैसा है तो, पैसा है तो सब कुछ है. Okay, fine. Okay, but how do you want to make money? वो मैं बताऊंगा. Okay. मैं पैसा बनाने का नहीं बता रहा हूँ. I am trying to tell you to prioritize your needs. So how do you want to make money? Also, you should have that idea. How do you want to make money? By working? What do you want to work? What do you want to be? अब आप यहाँ पे आए हैं, मेडिकल कॉलेज में आए हैं, तो डेफिनेटली you will be becoming a doctor, right? Now it depends on you what kind of a doctor you become.
if you start prioritizing your needs to become a doctor, if you start prioritizing your works, if you start prioritizing yourself above everything else, then definitely tomorrow you will be a better doctor, a better human being also. Okay, so start prioritizing your needs. Make a to-do list of the day. Every day morning you get up, you make a to-do list what I have to do today. And in the evening, check whether you have completed all these tasks. That will help you to keep yourself on track. Throw yourself into your studies. If at all you are not able to sit and study, then make yourself go sit and study. Keep your mobile logged inside. Keep your mobile, keep your devices inaccessible. So how do you keep your mobile inaccessible? Keep it locked inside, but the key is with you. So what you do? Give it to your friend. Tell them, for the next 2 hours, do not give it to me. Whatever, let anything may happen. Or you give it to your parents. Or keep it somewhere where you cannot take it. So keep it inaccessible. And if at all these things are not working, still you have problems, then definitely you need to seek therapy. Because there might be some underlying cause that is actually making you not able to make some rules for yourself and prioritize your needs. So definitely you need to seek therapy. So this is what you can do for internet addiction. Now next is very important thing, anger. किस किस को गुस्सा नहीं आता? नहीं आता? Okay, good. क्या होता है गुस्सा? क्या होता है? What is anger? What is anger? फिर गुस्सा आते हैं तो क्या क्या करते हैं आप लोग? चिल्लाते हैं और चीजें तोड़ते हैं. हाँ, क्या क्या तोड़ा अभी तक? और क्या? यस, और क्या? थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे भी सुनाई दे. नहीं, माइक नहीं चाहिए. लोग गाली भी देते हैं. वो तो यार नॉर्मली देते हैं. गुस्से में देते ज्यादा. ज्यादा मेरे को तो यहाँ लगा यहाँ पे तो नॉर्मली वही चलता है. आधी बात तो पूरी होती ही नहीं है बिना गाली. आधी बात तो गाली में ही खत्म हो जाती. तो गुस्से और ना गुस्से का कोई फर्क ही नहीं पड़ता गाली के साथ. Okay, what is anger? So anger or aggression, it refers to any behavior including verbal outbursts that involves attacking another person, animal or object with the intent to cause harm. With an intent to cause harm, you want to hurt someone. When such behavior becomes frequent or intense, it may indicate an underlying mental health issue. ये गुस्सा सबको आता है, ठीक है? Some degree गुस्सा सबको आता है. It can be from mild to moderate to severe, 0 to 100. किसी ना किसी लेवल पे गुस्सा सबको आता है. How do you react to it? How do you respond to people in during that times is what varies. Okay. Now, if at all you do certain things, then that might be considered as you are having some mental health issues. So adolescent boys, they may engage in bullying. Bullying तो normally चलता ही है, मजाक उड़ाना, कुछ ना कुछ ना टांग खींचना, but that can actually go to an extent where it leads to people go into suicidal tendencies, suicidal behaviors. Okay, so bullying is actually serious. Fighting or acts of violence which can be physical or sexual in nature. Impulsive violent acts can sometimes result in severe consequences including death.
क्या हुआ? हाँ, ठीक, चलो आगे। हाँ, मेरे को रोके रखोगे तो मैं और लेट करूंगा, जल्दी खत्म नहीं होगा, और फंसे रहोगे, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। थैंक यू। So adolescent boys, they may engage in bullying or fighting or different kinds of acts of violence. It might be physical, it might be sexual. All these kinds of violence can happen. So impulsive violent acts can sometimes result in severe consequences, including death. It might happen. Teenage girls, on the other hand, they may experience abuse or violence or aggression from a partner. All these kinds of things happen. Now, anger, what happens? There will be two people always, right? So, one person who is angry and one person who is facing that anger. So, you have to know what is anger, how that person reacts, how that person behaves, and how you got to react. आप कैसे बिहेव करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है whether that anger is going to again burst out or it is going to get suppressed. So what needs to be done for anger management? क्या करना है? अगर आपके साथ कोई गुस्सा हो रहा है तो आप क्या करेंगे? हाँ, आपके साथ कोई गुस्सा हो रहा है, मैं गुस्सा हो रहा हूं, और आप क्या करेंगे? स्पेस देंगे, ओके। और कुछ? क्या करेंगे? क्या करना चाहते हैं? वहां से चले जाएंगे, वही स्पेस देना हुआ ना। और क्या? और कुछ? शांति? शांति कैसे लाएंगे? ठीक है, first thing that you can do is diversion or distraction. Engage in another activity such as taking a walk, having a shower or drinking water. In both the times it can happen. See, if you are angry, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, वहां से हट जाइए, जहां पे भी जो भी बात चल रही है वहां से हट जाइए. That you can do. One thing. Second thing what you can do, अगर आप घर पे हैं जाके एक शावर ले लीजिए, थोड़ा ठंडे हो जाएंगे. नहीं तो जाके एक गिलास पानी पी लीजिए. You have to distract yourself. You have to divert your attention from that particular thing that is making you angry. ठीक है? This can work even when you are facing someone who is angry. वो कैसे? If somebody is getting angry on you, try to keep yourself little away ताकि हाथ ना पड़े. और क्या कर सकते हैं? उनको एक गिलास पानी ले जाके दीजिए, ठीक है? रोज एक गिलास पानी पिला दो, थोड़ा सा शायद शांत हो जाए. Then take a time out. A step away from the situation to cool down. Both this. It usually helps, especially in couples. Relationships में it works very well. If you have understanding between you two, whenever you are having an anger episode, always have an understanding that whenever we will be angry, either one of us are angry, we'll step away for some time, then we will come back. You need to come back. Step away से नहीं होने वाला. Step away for a certain time, then come back. Once you are relaxed, once you are calmed down, come back and then discuss and deal with that issue, whatever happened. You need to deal with the issue, but not when the tempers are high. Identify your triggers. What is making you angry? What is prompting that anger? Why suddenly you start jumping up? तुम सोडा बॉटल कैसे बन गए? राइट? हिलाया, छोड़ा, सब निकल गया. तो सोडा बॉटल नहीं बनना है. क्या बनना है? पानी का बॉटल नहीं. क्या बनना है? सॉस का बॉटल. राइट? कोई कितना भी हिलाए, whatever situation makes you, सॉस बाहर ही नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल होता है. तो
Don't leave yourself on the mercy of a situation that you can be shaken at any time. So identify the triggers. Be mindful of all the kinds of triggers that are making you angry. Then anger log. This can help when you have anger episodes almost every time. अगर आपको बार बार गुस्सा होने का मजा आता है तो you can use this anger log. Have a diary with yourself. Every time once you're angry, once you come down from that anger, then sit, think what happened during that time. What all happened. Why you became angry, what you did during that time, and how you came out of it. Start making a log of it. Slowly you will start identifying that there is a pattern. There is a pattern of the triggers which makes you angry. There is a pattern which you follow during that period, and there is a pattern how you actually come down. So start having that anger log. It is very helpful. Then practice active listening. Sunna shuru karo. Problem what happens is we often listen to reply, not listen to understand. सुनने के लिए तो सुनते ही नहीं है, वापस बोलना है. जैसे ही किसी ने कुछ भी बोला, we just want to reply back, short back. तो वो नहीं करना है. Start listening actively. Again, अगर आपके साथ में कोई गुस्सा हो रहा है, सामने से कोई गुस्सा हो रहा है, but you can do this. This I have actually tried personally also. अगर सामने से कोई गुस्सा हो रहा है, keep your eyes little low, don't make any eye contact. ठीक है, और बहुत धीरे से बात करो. वो कितने भी जोर से बोलेंगे, धीरे धीरे उनको भी नीचे आना पड़ेगा. बिकॉज ड्यूरिंग एंगर व्हाट हैपेंस, दे आर एट अ वेरी हाई वाइब्रेशन, वेरी हाई एनर्जी. वो एनर्जी को नीचे लाना जरूरी है. तो आपको क्या करना है, आपको खुद को अपने आप को बहुत लो एनर्जी पे ले आओ. डोंट मेक एनी आई कॉन्टेक्ट एंड स्पीक वेरी वेरी like in a low volume, so that it becomes very difficult for them to hear. Then they want to hear, because when you are angry you want to hear anything and everything, because you want to reply for everything. So अगर आपके सामने कोई गुस्सा हो रहा है, बहुत धीरे से बोलो ताकि उनको सुनाई ना दे, उनको सुनने के लिए कोशिश करना पड़े. And during that time they will actually start getting distracted. Okay. Talk to a supportive person. अगर बाकी कुछ वर्क नहीं किया तो then start, go speak to someone, speak to your friends, speak to someone who actually cares for you, who actually listens to you, non-judgmental. Okay, so start sharing your feelings with somebody like that. Develop self-control. डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए या कोई मेडिटेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस कीजिए. Start having some self-control techniques so that you can face that anger issues. So all these things that you can do to get rid of anger, to manage your anger. Fine, clear? कुछ पूछना है? So what is exam fear? Last part. बहुत जल्दी खत्म हो रहा है. क्या है एग्जाम फियर? क्या है एग्जाम फियर? क्या है? आपको तो होता ही नहीं है, आपके टीचर्स को होता है. एग्जाम आ रहे हैं, मेरे बच्चे लिखने, क्या लिखेंगे? ऐसा कुछ ना लिख देना कि मैं पढ़ ही ना पाऊं. वाइवा में तो और डर लगता है, स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर्स को. तो ये एग्जाम फियर, लेकिन मैं स्टूडेंट्स का बता रहा हूँ. व्हाट इज दिस एग्जाम फियर और टेस्ट एंजाइटी और परफॉर्मेंस एंजाइटी ऑल्सो. What it describes, anxiety a child may experience when exams are approaching, or when any kind of appearances, any kind of performances. Before that, whatever kind of anxiety, whatever kind of fear you feel, all that comes under your exam fear or test anxiety or performance anxiety. This anxiety can negatively impact performance and may even lead to physical symptoms, causing some students to avoid exams altogether. Just before exams, toilet जाना है बार बार. एग्जाम के पहले बार बार टॉयलेट जाने का लगता है ना, उस वजह से भी एग्जाम मिस हो जाता है. एग्जाम के बीच, हाँ, एग्जाम के बीच में तो यहाँ पे टॉयलेट में ही रहते हैं आधे. वो दैट इज नॉट एग्जाम फियर, दैट इज एग्जाम टैक्टिक्स. Exam fear is something that you feel because you start running away from that situation. You don't want to face that situation. That is what leads to exam fear. कितनों को है ऐसा? या स्टेज परफॉर्मेंस, स्टेज फियर है, राइट?
या किसी नए लोगों से या नए एक ग्रुप से बात करने में डर लगता है. All these comes under this actually performance anxiety. Because you want to show yourself as a better person, as a good person. You want to show yourself. तो उस वजह से वो एक एंजाइटी रहता है. क्यों रहता है? Because there are lot of self doubts happening inside. क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या वो सुनेंगे? क्या मैं सही लिख रहा हूँ? क्या मैंने सब पढ़ लिया है? All that. So causes क्या है? पहला तो parental pressure. So much of pressure from parents. मार्क्स लाओ, राइट. पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी, और वो नेबर्स का भी बुला के पूछते हैं कितने मार्क्स आए, राइट. तो वो वाला प्रेशर. हाई एक्सपेक्टेशन, आपका खुद का भी एक्सपेक्टेशन एंड इवन फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट दे हैव ऑन यू. लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस. कंपैरिजन, राइट. बहुत बुरा लगता है दूसरे के साथ जब कंपेयर करते हैं, राइट. नहीं, ठीक है. पुअर स्कोर इन प्रीवियस एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आए थे, उस वजह से अगेन सेल्फ डाउट हो जाता है कि अब अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, या सेम क्वेश्चंस कैसे होंगे. लेस प्रिपरेशन, जो आप लोग के साथ नहीं होता, आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो मुझे पता है, लेकिन लेस प्रिपरेशन इज वन रीजन एक्चुअली. एंड देन स्केयर ऑफ स्कोल्डिंग और पनिशमेंट्स, वो तो आप लोगों को है ही नहीं. स्केयर ऑफ स्कोल्डिंग और पनिशमेंट्स, है ना. ठीक है. What happens? Effects of exam fear and text anxiety. What happens? First thing is forgetfulness. Difficulty recalling information. वाइवा में आके बैठते हैं, पढ़ा था, पूछते हैं क्वेश्चन, सडनली पढ़ा था, फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे ऊपर ही देखते रहे, तो मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है. कुछ लोग सही में बताते हैं, सही में करते हैं, याद नहीं आ रहा है. कुछ लोग दिखाने के लिए भी करते हैं कि याद नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम ऐसे निकल जाएगा, राइट. So difficulty recalling information or experiencing blank moments, that is forgetfulness. Severe anxiety, intense feeling of anxiety that may manifest physical, such as trembling hands or sweating or some kind of abdominal discomfort. अंदर से कुछ ऐसे कुछ घूम रहा है, right? All that kind of feeling. Then sleep disturbances. रात में नींद ठीक से नहीं आएगी, डर रहता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा. Trouble falling asleep or staying asleep. Frequent urination or frequent going to toilet. Then symptoms like nausea and irritable bowel syndrome, decreased desire to eat, complaints of stomach aches, headaches, and generally body aches, all kinds of body aches. So all these kinds of effects are there due to exam fear. What can be done? Tips चाहिए, ठीक है. A, for avoid distractions. First thing is avoid distractions, right? क्या करना है, कैसे अवॉइड करना है. बैठते हैं, बुक लेके बैठे, सडनली यहाँ पे टिंग टिंग टिंग, इधर देखा, हर 2 मिनट में ये टिंग टिंग, हर 2 मिनट में कोई ना कोई मैसेज या कुछ आ रहा है, you are getting distracted. Or somebody walks from there, you start looking at them but not looking at me. क्यों? इतनी देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ. This is all distractions. वहां से कोई गया, यहाँ कुछ हो रहा है, वहां हवा आ गई, राइट, है ना. हाँ, तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस है. अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. बी फॉर हैव ब्रेक्स, हैव शॉर्ट ब्रेक्स. आप पढ़ने बैठते हैं, डोंट सिट एंड रीड फॉर लाइक आवर्स टुगेदर, तो नहीं करते, लेकिन फिर भी डोंट डू दैट. रीड फॉर हाफ एन आवर, 30-35 मिनट्स के लिए पढ़िए. देन हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक. हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक. वो ब्रेक में क्या करना है, बुक को बंद कीजिए, उठिए, वहां से हटिए, दूसरे रूम में जाइए, बाहर जाइए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए अपने आप को, एक ग्लास पानी पीजिए, देन कम बैक. हैव शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडीज. 30-35 मिनट्स के बाद डेफिनेटली टेक अ ब्रेक. चेंज योर रूटीन और टाइम टेबल. टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर नीड्स बनाइए, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज बनाइए. बी ऑनेस्ट व्हेन यू आर मेकिंग अ टाइम टेबल. टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना सुबह 9 बजे से
9 to 10 ये पढ़ा, 10 to 11 कोई ब्रेक भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना खाना पीना, कुछ भी नहीं, सोना भी नहीं, ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं। बन तो जाता है, उसका बनाने के बाद अब ये कौन फॉलो करेगा? तो इसलिए टाइम टेबल बनाइए अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। आप कितनी देर बैठ सकते हैं? 30 मिनट्स बैठ सकते हैं, देन मेक योर टाइम टेबल लाइक दैट। 9 to 9:30 I will read this subject, then take a 5 minutes break or a 10 minutes break, then again 9:40 to 10:10 I will read this another topic, and then start discussing whatever आप लोग जो भी पढ़ते हैं आप पढ़िए, and then have group discussions, that will help you. Have group discussions, or you read one topic, ask your friends to read another topic, then you teach that topic to your friend, listen to the topic from your friend, then go back and then revise again. Have group discussions, that will help you. Engage 2 or 3 subjects. एक ही सब्जेक्ट 3-4 दिन बैठ के मत पढ़िए, बोर हो जाओगे, मर जाओगे, वो नहीं करना है। दिन में एटलीस्ट 2 या 3 सब्जेक्ट या 2 या 3 अलग अलग टॉपिक्स लीजिए, अलग अलग टॉपिक्स लीजिए, ताकि यू विल बी having fresh mood, you will be feeling fresh to read something new. अगर एक ही टॉपिक को आप 3-4 दिन के लिए पढ़ते जाएंगे, एक ही सब्जेक्ट अगर 3-4 दिन आप पढ़ रहे हैं, you will be bored to death. So don't do that. Then some of the other things that you can do, writing short notes, small notes बनाइए, ठीक है, acronyms बनाइए, codes बनाइए, ठीक है, जिससे भी जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, codes बनाइए, गानों में लिखिए, गाने मत लिखिए, गानों में लिखिए क्या पढ़ना है, ठीक है, वो। देन गेटिंग हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स, वो तो आप लेते ही हैं। मल्टीपल रिविजन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक चीज आज पढ़ लिया, उसके बाद अब अगले 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए उसको छूना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आज पढ़ा है, उसको रिपीट कीजिए, एटलीस्ट once in a week, once in 10 days, keep repeating, keep revising whatever you have studied earlier. Keep that habit of revising so that stays in your mind fresh always, ठीक है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, पढ़ाया 1 साल पहले, कुछ भी पूछा एकदम से, 2 दिन पहले ही पढ़ाया होगा, पूछा, ऐसा रिएक्शन रहता है कि पिछले 10 साल में कभी वो सुना भी नहीं था, राइट? That is because you are not revising it. So revise your topics, repeat your topics again and again, so that you can, that stays fresh in your mind, that stays fresh in your memories. So this is what has to be done for all the challenges that is happening in your life, especially for your internet addiction, your anger, and exam fear. And what can be done through Ayurveda to be healthy and stress free? What Ayurveda says, नित्यम हिताहार विहार सेवी, बोलिए, हाँ क्या है? नित्यम हिताहार विहार सेवी. So daily try to have a good food, food for your gut, good food for your mind, right? Nityam hita ahara vihara sevi samikshakari. Be careful, be thoughtful about doing anything and everything. Visheshu asakta, try to keep your mind and your sense organs in your control. Do not get under the control of your mind and your sense organs, but keep them under your control. Data, do some charity. Tama, try to be grounded, try to stay in the same whenever you're facing any ups and lows in your life. Satyapara, try to be as truthful as possible so that you don't have to change your answers every time. Because when you lie once, what happens? Then you have to find a new lie every time, right? So try to be as truthful as possible. Shamavan, be kind and be humble. And Aptopasevi, please listen to your gurus, listen to your teachers. They know better than you, because we all have faced all these challenges. So try to listen to your gurus, listen to your teachers, and try to follow all these, and definitely you can have a very stress-free and a happy, healthy, physically, mentally, socially, spiritually healthy life. Final words before I finish. What you need to do, keep track of your time by examining how you spend it. So keep track of your time, how you are spending it, for what you are spending.
किस चीज के लिए आप अपना टाइम यूज कर रहे हैं या अब्यूज कर रहे हैं, उस पे फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज, कीप योर गोल्स इन योर माइंड। आपको कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, वो आपको पता है, आपके माइंड में। बट देन फॉर दैट मेक शॉर्ट टर्म गोल्स and then start prioritizing things what you want to do and follow that. Planning your work is important, but be sure to work your plan. Plans बनाइए, टाइम टेबल तो रोज बनता है, राइट? हर 5 दिन में नया नया टाइम टेबल बनता है, बट फॉलो नहीं करते। सो मेक अ टाइम टेबल एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट। प्लान एंड देन स्टार्ट फॉलोइंग इट। Be sure to utilize rehearsal strategies as well as a study system to get the most from in class and out of class time. So revising, rehearsing is very, very important. The more you revise, the more it will stay fresh in your mind. So work to achieve your goals, change strategies if when necessary. Whatever you have been doing, you have been getting a certain result. So you want to change the result, then you definitely need to change the process. Only when you change the process, you will get a different result. So start making plans and execute them so that you can get your goals. And minimize stress by making sure you have your me time for yourself. Every day have some me time for yourself. Just sit, keep aside everything, all your distractions, keep aside your mobile, keep aside everything, and then just introspect yourself. Try to think what you want to do in your life. Just breathe, relax, go for a walk, utilize your me time, and always hope. Because hope is finding happiness, opportunity, and positivity in everything and everywhere, every time. So mind your mind, keep smiling. Thank you. Thank you, sir. Now the session is open for any questions. Any questions? Thank you, sir, for the informative session. I request you to be seated, sir. Now I request Dr. Sridhar, sir, the chairperson of the session, to speak a few words about the session. Respected dignitaries of and on stage, my dear colleagues, my dear students, this is the beauty of Manas Roga. बाकी जो भी टॉपिक्स चल रहे थे तब कुछ लोग रिलेट कर पा रहे थे अपने आप को, कुछ लोग मुझे क्या लेना देना, डायबिटीज तो मुझे है नहीं, मुझे डायबिटीज तो ट्रीट करनी भी नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे भी थे, है ना। कोई भी और टॉपिक चल रहा है तो उससे रिलेट नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, बट दिस इज ब्यूटी ऑफ मानस रोगा। ईच एंड एवरीबडी गेट्स रिलेटेड विद दिस, कहीं ना कहीं किसी एंगल से एवरी वन ऑफ अस वी आर इनटू इट। ये है, सबको प्रॉब्लम किसी ना किसी एंगल में रहता ही है। दैट्स व्हाई we often keep speaking, me and Dr. Rinjin sir. Panchakarma मेरा subject है. Panchakarma in Ashtanga Ayurveda, we proudly say that Panchakarma is useful in all the Ashtanga Ayurveda. Now, after listening to his speech, I think he also shares that stage with me. Manas Roga in all the Ashtanga Ayurveda. It is relatable. I would like to share some views of mine in respect to his presentation also. That is, first thing is advice to adolescents. This is very important. When it comes to challenges of Manas Roga, there are some points which I feel as first is screening. Screening is very difficult because there are no diagnostic tools as such. He'll also be facing those problems. For diabetes also you have got some diagnostic tools, numbers, facts, everything. But for this Manas Roga you don't have any diagnostic tools. और जो आता है वो कोई बोलता नहीं है कि मैं पागल, उसको आप बोलो कि तुम पागल हो तो आपको पागल बोलता है ना। तो admitting that some problem is within us, this is a very big thing.
इसके लिए लोग आते नहीं हैं, बोल के नहीं आते कि आपको कि हमें कोई प्रॉब्लम है। पहला पॉइंट ये है कि पेशेंट अपने आप को पेशेंट ही नहीं मान रहे, तो पहला तो उनको कन्विंस करना है कि तुम इस बीमारी का मरीज हो। अभी कुछ देर पहले एक पेशेंट आया था पंचकर्म में, उनका ये था कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मुझे पंचकर्म लेना है। मैं सेड व्हाट? मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मुझे पंचकर्म लेना है। मैं सेड होता क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस? वो घाव होता है। कहाँ? वो पेट में होता है। देन आई गॉट टू नो, मैं समझाने गया आपको क्या प्रॉब्लम है ये बताइए पहले। अरे बोल तो रहे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पंचकर्म लेना है। देन आई फेल्ट नीड ऑफ रिंजिन सर। अब इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस सिखाने से पहले एक्सेप्टेंस सिखाना पड़ेगा कि उसको पता तो चले कि कैसे बोलना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है। पेशेंट्स में ये बहुत ज्यादा नीड है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड मानस रोग इन अष्टांग आयुर्वेदा। किसी ना किसी स्टेज पे पेशेंट को इनकी जरूरत पड़ती ही है, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चैलेंज इज एडोलेसेंस, है ना। किसी 40-50 उम्र के ऊपर जो है या तो 10 साल से छोटा जो है उनको समझाना आसान है, पर एडोलेसेंस को समझाना अपने आप में ही एक चैलेंज है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं रहता है। कोई भी चीज बोलो, सबसे पहले क्या टॉपिक था वो नहीं रहेगा, सबसे पहले हर्ट क्या होता है? ईगो, है ना। सही गलत तो बाद में, तुमने बोला कैसे? अरे सही बोल रहा हूँ, सही है, ठीक है, तुमने बोला कैसे? हाँ, दैट इज वाई दिस सब्जेक्ट, इनका जो ओपीडी है ये बहुत चैलेंजिंग ओपीडी है एंड इट्स नीड ऑफ एन आवर। ये जो अभी डिस्कशन हो रहा है लाइफ स्टाइल के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एम किसके लिए ये चीज करना है? अभी उन्होंने पूछा प्रायोरिटाइज योर नीड्स करके, किसी ने भी ये नहीं बोला कि मुझे सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है एज अ डॉक्टर। किसी ने भी बोला क्या सोसाइटी को एज अ डॉक्टर आई वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग? किसी ने नहीं बोला। पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान, यही बात चले ना, एंड एक्सपेक्टिंग दोस अगेन यू विल लैंड अप देयर ओनली। लिख के देता हूँ, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना पैसा नहीं मिलेगा, है ना। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पैसे मिलने से पहले, खुशी मिलने से पहले ही पागलपन आ जाएगा, है ना। एक्सपेक्ट लेस, वर्क मोर, ट्राई टू गिव। दाता वर्ड था ना, दाता, है ना। गिव मोर, एक्सपेक्ट लेस। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस इन ट्रीटिंग अदर डिसीजेस लाइक डायबिटीज का बात चल ही रहा था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात चल रही थी। डायबिटीज में स्ट्रेस को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, if your prescription doesn't have anything related with stress, your consultation doesn't have anything related with stress, you are an incomplete doctor in diabetes. Because आप कितना भी मेडिसिन लिखो, कुछ भी करो, कोई भी ट्रीटमेंट दो, अगर उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो नो। ये अगर गर्म हो जाता है तो लीवर विल फील कि बहुत बड़ा कोई काम चल रहा है शरीर में, उसके लिए बहुत ज्यादा ग्लूकोज की नीड है, तो उतना ग्लूकोज वो डाल देता है। यहाँ से भी गर्म नहीं होना है। इसीलिए पहले एक रीत चलती थी, वो है एक्चुअली, बुजुर्गों को पूछे तो वो बोलते हैं अपना बॉडी कैसा डिजाइन हुआ है कि दिमाग कम चलाना है, शरीर ज्यादा चलाना है ना। मोर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड लेस ऑफ मेंटल स्ट्रेस। पर आजकल क्या हुआ है, उल्टा हो गया है। फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हुआ है, मेंटल एक्टिविटी इट्स ऑलरेडी अबव पार। बैठे, खाली बैठे भी ये 100 के ऊपर स्पीड में चल रहा है। दिस विल नॉट गो इन अ गुड डायरेक्शन, वो कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट ही होना है। इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रखे, देन दिस विल कम अंडर कंट्रोल। ये जो बैल होते हैं ना, उनको ज्यादा दौड़ाओ तो कंट्रोल में रहते हैं, चुप बिठाओ तो कूदते रहते हैं, है ना। दैट इज वाई फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एडोलेसेंस में और बच्चों में भी। एक पीडियाट्रिशियन के साथ मेरा बात हुआ था, उन्होंने ये बात बोला कि आज का बर्निंग इश्यू है, बर्निंग टॉपिक है रील्स। रील्स क्या हो रहा है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, मैक्सिमम ऑफ 60 सेकेंड का रील जो है, छोटे से छोटे बच्चों में भी अटेंशन डेफिसिट कॉज कर रहा है। दे डोंट वांट एंड दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी टॉपिक फॉर मोर देन 50 सेकेंड्स। कोई भी टॉपिक दो उनको, वो रील्स जैसा 30 सेकेंड में, इन एवरी 30 सेकेंड दे वांट अ न्यू टॉपिक। एवरी 30 सेकेंड टॉपिक चेंज होना है, टॉपिक चेंज है, नहीं तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलेगा उनका, गर्म हो जाएगा, नहीं तो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी सब खत्म हो जाएगा।
So that is very important, and we should be in a stage of advising others rather than हम खुद patient नहीं बन सकते. We can't afford to do that. We have got a higher responsibility. We should always be in a stage of advising others. उसके लिए पहले हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा. इंसान he has reached till moon Mars, but still he is not able to control himself, है ना. इसके लिए एक सदगुरु का एक ये था, उनको पूछा गया कि आपको गुस्से में कभी देखा ही नहीं गया, गुस्से में आपको कभी देखा ही नहीं गया. He said, I have not given this privilege to anybody. Nobody can make me happy, nobody can make me sad or angry. I have kept this for myself. I will decide whether I should be angry or whether I should be happy. दिस इज अ वेरी बिग थिंग. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम पेशेंट नहीं बन सकते, प्लीज नोट. हमें वो हक नहीं है. हमें डॉक्टर बनना है, हमें पेशेंट ट्रीट करना है. सो प्लीज कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स and try to analyze things. And finally there are two things to be forgotten to lead a happy mental life. Very simple theory and it's very हम भी आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं. Only two things you need to forget to be happy, very very happy. First thing is whatever good you have done to people, you forget those. Whatever good thing you do to people, you just forget it. And second thing is whatever bad people have done to you, you forget that. अगर ये दो चीज करेंगे, you will be happy. It's sure that you will be happy. So finally, with these words, I would like to thank Dr. Rinjin sir for his beautiful, valuable information. Need of our था, ये बहुत जरूरी था बच्चों के लिए, सबके लिए. With that, I tell you sir, we'll try to follow. नहीं तो it's all waste. अगर follow नहीं करोगे तो ये सब waste है. And you don't need patient also to do this. You can try it on yourself right from today itself. I thank you very much, sir. Thank you, sir. Now I would like to welcome Dr. Krishna sir, Professor GGIMS, for the felicitation of our resource person, Dr. Rinjin Krishna. And I would also like to welcome Akleshwar Tiwari, Faculty, Dayanand Ayurveda College, C1 Vihar, for handing over mementos and certificates to our chairperson and co-chairperson. I invite Akleshwar Tiwari sir to hand over the certificate and memento to our chairperson, Dr. Srivastava sir. Now I request to hand over the certificate and memento to our co-chairperson, Dr. Sandhya ma'am. Now I request the dignitaries over the dais to present a certificate to our session coordinator, Dr. Sri Lakshmi ma'am. And the reporter of today's session, Akash Verma, second year BMS student. Thank you, Dr. Rinjin sir, for the informative speech. And I also thank Dr. Sridhar and Sadhya ma'am. And I also thank all the faculty, delegates, and students for your presence in this session. Thank you, everyone.
The session ends here.